All of you have been chosen through one of the most rigorous and respected competitive exams in the country, and let me congratulate you. In the last 60 years, this academy has shaped thousands of bright minds to bring about a tremendous change in the society. I congratulate you on becoming a part of this great tradition and legacy. While you have displayed individual brilliance in coming thus far in your lives by being competitive, the journey ahead would place demands of teamwork, collaboration, grit, determination upon you right from the very beginning of your career. There is freedom waiting for you on the breezes of sky, and you ask, what if I fail? Oh my dear trainees, what if you fly? Hello everyone, happy morning to everybody. We, the OTs from Labasana, are just moving to the next destination in the trek, which is the Clouds End. It's 6:45 a.m. in the morning, and I suppose we will reach there soon, but with all those fun and frolics, it will take some time. मिलकर फिर बनाए एक नई कहानी, आशाएं हैं बदली बदली है हर जुबानी, कंधे से कंधा कदम से कदम, अगर कुछ है तो ढूंढ लेंगे हम, कंधे से कंधा कदम से कदम, अगर कुछ है कम तो ढूंढ लेंगे हम। I remember the words of Buddha, who said, if you are facing in the right direction, all you need to do is to keep walking. In the next phase of your life, you are starting from today, you have to understand what is the right direction for you, and you have to have the energy to keep walking.
नई सीख को देश की सेवा में लगाएं। अपने भीतर का विद्यार्थी कभी मरने मत देना। जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों को पार कर जाए, भीतर का विद्यार्थी बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देता रहता है। हमें इसे साकार करने के लिए अपने आप को सज्ज करना है, अपने आप को समर्पित करना है, अपने प्रयासों से परिवर्तन ला करके रहना है। नया भारत बनाने का सपना हर हिंदुस्तानी का है, लेकिन हम लोगों की जिम्मेवारी कुछ ज्यादा है।